Welcome to all of you to one more lecture of the chapter Acids, Bases and Salts of our 10th standard. In this lecture, we'll discuss about caustic soda. That what is caustic soda, how it is prepared by chlor-alkali process, and then we'll discuss the uses of different products obtained during the chlor-alkali process. So let's start. So what the chemical name of caustic soda? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम caustic soda. Sodium hydroxide is the chemical name of caustic soda. Sodium hydroxide. And what the formula of sodium hydroxide? It is NaOH. So that's the chemical name and chemical formula of caustic soda. Now come to its manufacture. Sodium hydroxide is prepared by the electrolysis of the concentrated solution of sodium chloride. That is called brine solution. So first of all, what is a brine solution? Brine, B-R-I-N-E. It is concentrated solution of sodium chloride, common salt. And when we carry out electrolysis of brine solution, we will get caustic soda. That is sodium hydroxide. Simple है. So how caustic soda is prepared? By electrolysis. क्या होता है ये electrolysis? The process by which the electrical energy is converted into chemical energy. So electrical energy is used to carry out the non-spontaneous chemical reactions. So in this case, the different constituent ions of sodium chloride, they will move toward the oppositely charged electrodes, and we have formation of different primary and secondary products. So let's see what are the products obtained during the electrolysis of brine solution. क्या क्या बनता है इस process से? So during this process of electrolysis, chlorine gas is produced. और वो कहां बनेगी? At anode. Hydrogen gas is produced at cathode. And sodium hydroxide solution is formed near the cathode. यहाँ पे ये anode cathode क्या है? We know that during the process of electrolysis, we have two electrodes, cathode and anode. Anode क्या होता है? The electrode connected to the positive terminal of the battery, that is called anode. The electrode connected to the negative terminal of the battery is called cathode. तो इस केस पे एनोड पे क्या बन रहा है? क्लोरीन गैस, ठीक है, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस. और हमारा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन कहां बनेगा? नियर द कैथोड, ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड chlor-alkali process, the process by which we have preparation of caustic soda is called chlor-alkali process. Why? Because of the products formed. कौन से products? ये क्लोर कहां से आया? क्लोरीन से. वो कहां बन रहा है? At anode. And alkali, कौन सा alkali? Sodium hydroxide. Alkali for sodium hydroxide. So the process by which we prepare sodium hydroxide is called chlor-alkali process. So let's see in detail the different reactions occurring at anode, cathode, and the overall reactions during the preparation of caustic soda. तो copy pen निकाल लो अभी. Start making your notes. Now we'll discuss in detail about the different reactions occurring in this process. Yes, now let's see the reactions occurring during the chlor-alkali process. The process by which we prepare caustic soda. कैसे बनाते हैं? By the electrolysis of brine solution. पता लग गया क्या होता है brine solution अभी? The concentrated solution of sodium chloride is called brine solution. So when we are doing electrolysis of brine solution, we have formation of
caustic soda along with the byproducts hydrogen and chlorine gas at the cathode and anode respectively. So let's see the reactions occurring during the chlor-alkali process. So first of all, we have sodium chloride. So when dissolved in water, क्या बनाएगा? Its constituent ions, that is sodium ions and chloride ions. Similarly, water dissociate partially upon electrolysis to form hydrogen ion and hydroxide ions. यहां तक ठीक है. अब आते हैं एनोड और कैथोड पे क्या होता है. एट एनोड वी हैव ऑलवेज ऑक्सीडेशन, एट कैथोड वी हैव ऑलवेज रिडक्शन. एनोड क्या था? द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड connected to the negative terminal of the battery is called cathode. तो एनोड पे क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, और कैथोड पे क्या होगा? हमेशा रिडक्शन. Now what is oxidation and reduction in terms of electrons exchange? Oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons. Oxidation is loss of electrons, reduction is gain of electrons. तो एनोड पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कौन करेगा इस केस में? क्लोराइड आयंस. सो क्लोराइड आयंस लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन एंड टू क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन गैस. कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बैलेंस करते हैं इसको. हमने 2 लगा दिया ना, यहां 2 लगाओ, यहां 2 आ जाएगा, यहां भी 2, ऊपर भी 2 करो. 2 करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे. पहले तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है. तो एनोड पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ विच गैस? क्लोरीन गैस. कैसे हुआ? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोराइड आयंस. अब आते हैं कैथोड पे. कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गेन कौन करेगा इस केस में? हाइड्रोजन आयंस. सो हाइड्रोजन आयंस gain electron to form hydrogen and 2 hydrogen combine to form hydrogen gas, dihydrogen gas. बैलेंस करो इसको भी. 2 2 2. ठीक है. कौन सा प्रोसेस है ये? प्रोसेस है रिडक्शन. अब आते हैं ओवरऑल रिएक्शंस में. तो हमारे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं? सोडियम क्लोराइड कितने हैं? 2NaCl. वाटर में डिसॉल्व कर दिया है तो अब ये एक्वस फॉर्म में है. एक्वस प्लस और क्या है? 2 वाटर, H2O लिक्विड. क्या करवा रहे हैं? प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस. करंट पास करवा रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन सॉल्यूशन. क्या क्या बन रहा है? देखिए, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. 2NaOH सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, जिससे हम फिर कॉस्टिक सोडा को सेपरेट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट. प्लस H2 गैस कहां बन रहा है? कैथोड पे. H2 गैस कहां से आया? ये हाइड्रोजन आयन से. H2 गैस कहां बन रहा है? एट कैथोड. और ये क्लोराइड आयंस क्या बना रहे हैं? क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. कहां पे? ये एट एनोड. Cl2 कहां पे? एट
एनोड, और ये NOH सॉल्यूशन कहां पे बन रहा है? एट द कैथोडिक डिपार्टमेंट। ये भी कैथोडिक डिपार्टमेंट में बनेगा इन द प्रोसेस ऑफ क्लोर एल्केली प्रोसेस। ठीक है बेटे, तो दैट्स अबाउट द क्लोर एल्केली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस था ये? क्लोर एल्केली प्रोसेस। और इसका नाम ये क्लोर एल्केली प्रोसेस क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोर कहां से है? क्लोरीन से। और ये एल्केली क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लोर एल्केली प्रोसेस। So that's about the different reactions occurring during the chlor-alkali process. Anode पे, cathode पे और overall reactions. Now we'll discuss the uses. The uses of the different products obtained during the chlor-alkali process. Uses of caustic soda, uses of hydrogen and chlorine in the different fields. That we'll discuss now. तब तक आप इसको नोट कर लो बेटे। Yes, now the uses of the different products obtained during the chlor-alkali process. The uses of sodium hydroxide, chlorine and hydrogen in the different fields. Let's start with the uses of sodium hydroxide, caustic soda. It is used in the manufacture of soaps and detergents. Soaps क्या होते हैं? That we will learn in the chapter carbon and its compounds. Soaps are produced by the alkaline hydrolysis of oils and fats, and the alkalis used in the process are sodium hydroxide and potassium hydroxide. Sodium hydroxide is used for the preparation of hard soaps, and potassium hydroxide are used for the preparation of soft soaps. That we will learn in detail in the chapter carbon and its compounds. So first क्या है? In the manufacture of soaps and detergents. Second, in the paper industry, in the dye industry. Dye क्या होते हैं? Which gives color. And in the rayon industry. So sodium hydroxide has wide applications in the field of paper, dye and rayon industry. In the petroleum refining also we use sodium hydroxide as a laboratory reagent. So in our labs we use sodium hydroxide in the different chemical reactions, in the different chemical processes. So it is used as a laboratory reagent. In the purification of bauxite ore. Bauxite क्या है? एक ore है, ore of aluminium. Ore, O-R-E. Ore क्या होते हैं? Ore are those minerals from which we can extract the metals most conveniently and most economically. ये हमारे वो मिनरल्स हैं जिनसे हम मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहां मिलता है ये? इन द अर्थ क्रस्ट। तो बिफोर एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट ओर we purify, we clean the bauxite ore, and that is done with the help of sodium hydroxide and carbon dioxide. The detailed reactions, the detailed process known as Bayer's process, that we will discuss in the 12th standard when we learn about metallurgy. So these are some of the uses, applications of sodium hydroxide. अब आते हैं uses of क्लोरीन। फर्स्ट करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। नो व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? द प्रोसेस बाय विच वी किल germs, microbes present in the various sources. In this case, the drinking water, that is called sterilization. So we sterilize the drinking water, we kill the germs, microbes present in the drinking water with the help of chlorine. Second, in the production of bleaching powder. So we can prepare bleaching powder from chlorine. कैसे बनाते हैं? That we will see later on in this chapter. In the production of hydrochloric acid, HCl. So by the reaction of hydrogen and chlorine,
we have preparation of hydrochloric acid and which has wide applications. अब आते हैं some of the uses of hydrogen. It is used in the production of why same hydrochloric acid, because in the production of hydrochloric acid we need both hydrogen and chlorine. In making of ammonia, which can be used for the preparation of fertilizers, for the manufacture of fertilizers, we can use hydrogen. In the hydrogenation of oils to obtain solid fat. What is hydrogenation? Addition of hydrogen. किसमें ऐड कर रहे हैं? ऑयल में. ऑयल जो कि लिक्विड फॉर्म में हम यूज करते हैं. ऑयल्स यूज एट आवर होम्स. Vegetable oils. So we can convert vegetable oils into vanaspati ghee, into solid fats. How? By addition of hydrogen in the industries in the presence of catalyst nickel. Last क्या है? As a fuel for rockets in the form of liquid hydrogen. So these are some of the uses of caustic soda, sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. So that's about this lecture based upon caustic soda, how it is prepared from chlor-alkali process and the uses of the different products obtained during the chlor-alkali process, the uses of caustic soda, chlorine and hydrogen. That's about this lecture. See you all in the next lecture. Till then, thank you और आप सबको नमस्ते.